So now in introduction, when you look at here, what I have made that, as I have said, this is a new approach to study the human geography, basically, which focuses on the spatial arrangement of phenomena. Spatial arrangement of the phenomena's name is itself reflected. नाम क्या है? Locational analysis. So when we talk about locational analysis, what the geographer approach in this analysis is to study the human phenomena in a particular space. Okay, so a spatial arrangement of human phenomena as locational analysis. So in human geography, this is the new approach, as I have seen, and where it focus spatial arrangement of various phenomena. Now, what we learn in human geography? Already I had discussed the physical versus human dichotomy. Earlier in the geography, the geographers, the earliest geographer, basically the ancient one, the medieval one, the classical geographer, really emphasize on the study of physical phenomena. वो environmental studies, nature के study या उससे related principles, laws, या फिर physical phenomena like the mountains, relief features, different relief features, topography, ठीक है, climatic phenomena, meteorological phenomena, इनकी स्टडी के ऊपर ज़्यादा फोकस था. They are focusing on that study, but later on the man is also become the center point of the study of geography, and the few geographers started learning the phenomena related to the human, like they started learning the population and its impacts for the environment. So how the man impacted the environment. Then a new branch has been evolved, okay, the human geography, where the geographer started learning the human phenomena, cultural aspect of the human being, how the religion affects the environment or the particular landscape. A new concept has been evolved, the cultural landscape in geography. एक नया concept evolve होके आता है, cultural landscape. So like that, then the human activity, the geographer started learning the primary activity, agriculture and allied activity, for the second, or different kind of services they started, the trade activities they started learning, how the people are connected through each other through the means of transport and communication. This also came into the study in the geography. This things evolve. These are the phenomena. These are the phenomena which the human being or the geographers or the scholar and things learning, and a new branch evolved which we called human. So what I have mentioned here, that in locational analysis, what is the approach in the locational analysis is that, let's understand first, is spatial arrangement of the phenomena, okay, in human geography. So basically they use all the methodologies which is applied in the spatial science. अब है कि वो कौन सी methodologies जो है वो applied होती है spatial science, जो ये सब यूज करने में. Basically the quantitative tools, basically in the study of this spatial arrangement of the phenomena, geographer started using the mathematical techniques, tools, formulas, and started finding out the or synthesis the basic theories. Based on that mathematical approach or a statistical approach, they started using the correlation, regression, standard deviation, central tendencies. All these tools has been applied. Okay, so what I have mentioned, that
in locational analysis to study the spatial arrangement of the phenomena, the geographer started using all the methodologies which is used in the spatial science. Now, what is the objective of this philosophy or approach in geography? ये क्यों आया अप्रोच? क्या बेसिक एम है, ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन और पॉजिटिविज्म में मैंने बताया था कि बेसिक एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था. वैसी ही थ्योरीज डेवलप करना जैसा नेचुरल साइंसेज में है, थ्योरिटाइजेशन, मॉडल बिल्डिंग, ये पर्पस था क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन. क्यों मैंने बताया था? क्योंकि ज्योग्राफी को लेकर एक कंफ्यूजन था माइंड में कि वेदर इट इज़ अ साइंटिफिक सब्जेक्ट और इट इज़ अ ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट. मैन आर्ट्स का सब्जेक्ट है या साइंस, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है या फिर साइंटिफिक अप्रोच. So there was a confusion in the mind of the scholars, and that's why the geography started losing their status and reach in a crisis system. So quantitative revolutions came during that period of time as a result of positivism. So what was the basic aim and objective of the positivism and quantitative revolution? To develop theories, models, to make this subject more scientific, to create such a principles which may be applied. Okay, तो लॉज और प्रिंसिपल बनाना, डेवलप करना, ये बेसिक पर्पस. वही सेम ऑब्जेक्टिव यहाँ लोकेशनल एनालिसिस में है, बिकॉज इट इज डेवलप्ड अंडर करंट ऑफ पॉजिटिविज्म एंड क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन. So what I have mentioned that what is the objective? मॉडल बिल्डिंग, एक्यूरेट जनरलाइजेशन, ऐसे लॉज बनाना, ठीक है, जो कि अप्लाइज हो यूनिवर्सली. अभी देखेंगे accurate generalization, theoretization with the productive power. And this statement is given by the Berry and the Marble in the 1960s. So who highlighted what is the objective of locational analysis in geography? In the term of, or in the statement of Berry and Marble, it is beautifully explained that what is the objective of locational analysis: to develop a new model theory in the field of geography based on gross generalization. Okay, this is the aim of locational analysis. This is the basic objective as suggested by Berry and Marble in the year 1998. इन्होंने बताया कि ये लोकेशन का पर्पस यही है ज्योग्राफी में. तो तुम देखोगे कि 1950 ऑनवर्ड्स थ्योरिटाइजेशन, मॉडल बिल्डिंग ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टार्ट हुआ. सेटलमेंट में आप कई सारी थ्योरी पढ़ते हो, पॉपुलेशन में पढ़ते हो. ऐसा नहीं है कि उसके पहले थ्योरीज नहीं थे, बट बहुत रेयर कॉन्सेप्ट, ठीक है ना. ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर प्रिंसिपल्स और थ्योरीज थे, बट ह्यूमन ज्योग्राफी पर सेंटर फोकस नहीं. तो यहाँ पर 1950 ऑनवर्ड्स ये डेवलपमेंट आप देखते हो, स्पेशली बिकॉज इन द ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एज आई हैव सेड, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, this approach applied in geography. Okay, as a result of this new philosophy also came in the geography, the locational analysis. So locational analysis is based on positivism, as I have mentioned, or as a result of quantitative revolution. तो ये याद रखना आप. Positivism underpin the approach which concentrate on आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्योरीज. पॉजिटिविज्म में भी क्या है? फोकस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ ए स्पेशियल अरेंजमेंट टू लर्न द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ प्लेस, एंड सो इट इज क्लोजली लिंक्ड टू द क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन.
अब स्पेसिफिक एरिया में व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग अ फेनोमेनास, कैन यू डेवलप सम थ्योरीज रिलेटेड टू दैट? जैसे आपने देखा सेंट्रल प्लेस थ्योरी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, what it stated that how a hamleted settlement or how a settlement started growing. What is the reason behind that? And we have learned various principles suggested by Christoller to develop such a large settlement. Okay, उसमें आपने देखा था, तो आपने मार्केटिंग प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया और क्रिस्टॉलर ने और बताने की कोशिश की कि कैसे एक हैमलेटेड सेटलमेंट अपने सराउंडिंग एरियाज को सर्व करता है और उसकी सेंट्रलिटी और पुल फैक्टर बढ़ जाता है, एंड उसके कारण वो सेटलमेंट ग्रो करने लगता है। उसी तरह से आपने ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल भी अप्लाई किया, उन्होंने एग्लोमरेशन इफेक्ट्स को भी एक्सप्लेन किया, तो तुमने देखा कि कैसे एक एरिया स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ फिनोमेनास पढ़ रहे हो, तो कैसे एक स्पेस, बिकॉज द सेटलमेंट इज डेवलप इन अ पर्टिकुलर स्पेस. So say for example, if this is the geographical area and where there are various settlements, okay, how a settlements started growing, अगर ये है कि क्या फैक्टर है ग्रोथ का, इसके बारे में ये थ्योरीज बताती है. तो क्या है कि पॉजिटिविज्म में स्पेशल अरेंजमेंट को स्टडी करना स्टार्ट किया और थ्योरी बिल्डिंग स्टार्ट. लोकेशनल एनालिसिस, as a result of this positivism, the various theories develop. Okay, now, so if someone is asking you ki why this approach brings in geography as a result of positivism and quantity, ठीक है, सेम टेक्निक्स यहाँ इस्तेमाल होने लगे जो वहाँ अप्लाई हो, ठीक है, टू लर्न द स्पेशियल arrangement of different humanistic phenomena. Okay, now अब देखो कि इसमें कंट्रीब्यूशन किसका, यहां मैंने मेंशन किया है कि द ज्योग्राफर इन यूएस advocate the cause of locational analysis, but it doesn't mean that only the US geographer has contribution in location. Other geographer, means the geographer of other part of the world, also contributed in the location. But of course, the major contributor are the US school of thoughts geographer. Okay, so a number of geographer in US, I had mentioned USA, United States of, advocate the cause of locational analysis. अब देखो obviously 1939 to 45 the phase was the era of the Second World War, and during that period quantitative revolution, positivism evolved. Of course, there is an impact of this revolutions and approaches in geography, which brings a new philosophy in geography known as locational analysis. तो मैंने क्या लिखा कि 1950 के आसपास अगर देखेंगे 50s onwards, this new approaches brings in geography or brought by the geographers school of thoughts, although it has much deeper root in the work of pioneer that were later adopted by geographers. लेकिन उसके पहले के भी geographer का contributions है locational. लार्जली मैंने कहा कि यूएस जियोग्राफर का कंट्रीब्यूशन है 1950s ऑनवर्ड्स, बट कुछ अर्लीस्ट जियोग्राफर है उनका भी कंट्रीब्यूशन है जिसको बाद में जियोग्राफर अडॉप्ट किया. ठीक है, अब एक और यहां मैंने मेंशन किया है, द बुंजी in 1966 wrote a thesis theoretical geography. Okay,
And what he stated that geography is a science of location. He brings location in the center point of the geography. उन्होंने कहा लोकेशनल स्टडी को फोकस करना है. ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ अ लोकेशन. Who stated that? The Bunji stated that. What does it mean? It means that Bunji was also a geographer who emphasized on the locational analysis. He took this approach and he used this approach in his book Theoretical Geography. So theoretical geography of Bunji is one of the landmark book which is very important book which where you can learn the concept of locational analysis, because he emphasized that geography is all about the study of location. तो ये बुक याद रखना, जब भी लोकेशनल एनालिसिस की बात आएगी तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, लिटरेचर है विच टॉक अबाउट द लोकेशनल एनालिसिस. वेरी इम्पोर्टेंट लिटरेचर विच talk about the geography is what? The geography is the study of location. In a particular location, when you started learning a specific geographical phenomena, okay, so here there is an approach which is applied by Bunzi in his literature is the location analysis. Okay, you see approach. Now the McCarthy, also influenced by the development of the field, he was an economist. So he introduced the economic theories in the field of geography. So here what we find with the work of McCarthy, the economy and geography come together. Further, other geographer also contributed. Okay. So here what I have mentioned that McCarthy influenced by the development of field of economics in which there is introduction of a spatial variable, and thus it provides link between the geographers and the economist, regional scientist in the 1960s and 70s. Say for example, if you try to find out the production of rice, rice is a very important crop in the tropical and subtropical areas. Okay. So as you know, the production of rice depends on the spatial features. As you know, across the world, the meteorological and climatic phenomena change. Okay. When you consider climatological phenomena, अब ये इकोनॉमिस्ट वो क्या देखते हैं कि क्या क्लाइमेटिक फेनोमेनास है क्या. अभी देखो, they started because man is doing this activity. This is the human activities. In human geography we learn the human activity. Agriculture is a human activity. So when you started learning this human activity, अब ये मत सोचो कि सर ने क्लाइमेटोलॉजिकल तो फिजिकल फिनोमेनास पढ़ रहे हैं. इट इज लिंक्ड विद द ह्यूमन एक्टिविटी. लोकेशनल एनालिसिस में कुछ इकोनॉमिस्ट ने भी वो अप्रोच पढ़ा जिसमें उन्होंने स्पेशियल कॉन्सेप्ट्स को यूज किया. मैंने क्या लिखा है कि इन इकोनॉमिक्स इवन इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्पेशियल वेरिएबल. अब तुमने दो एरिया देखा, the area A and area B. There are two spaces, two locations, and you started learning the production of rice in area A and area B. What are the parameters on the basis of which you can learn the production? What are the factors of production? As you know, the factor of production is, first is the land. When we talk about the land, the quality of soils affected the production of the rice. Okay, so the land is the primitive factor of production. The labor is also a primitive factor of
production. The mechanizations is also the factor of production. Okay, the economic conditions of the labor is also the factor of production. The climatic conditions which is there, the amount of rainfall which is there, or the temperature, okay, which also determine the production. So as you know, the economics also started applying what? The spatial variables. यहाँ का variable, यहाँ का variable. They fixed the parameter and started finding out what are the variables which affected the production. तो अभी क्या हो गया, इकोनॉमिक्स में भी ज्योग्राफी का इस्तेमाल होने लगा, लोकेशनल एनालिसिस का अप्रोच आया. तो मैंने क्या कहा कि मिकार्टीज जो है, he also influenced with this approach. Okay, and now the economy and geography is interlinked. So in geography you are also learning the human activities, basically through the geographical approach. आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन. आप पढ़ते हो क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस. व्हाई इट इज? बिकॉज ऑफ द इनहैंस प्रोडक्शन. आप क्या पढ़ते हो? लैंड यूज पॉलिसी. इन डिफरेंट एरियाज देयर आर डिफरेंट, फॉर द डिफरेंट पर्पसेस द लैंड इज यूज्ड. ओके, आप स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फिनोमेनास पढ़ते हैं. हर तरह के सॉइल्स के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इरिगेशन के लिए, बिकॉज सॉइल हैविंग डिफरेंट वाटर होल्डिंग एबिलिटीज. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? समझ आ रही है मेरी? तो you all have started learning the resources, its distribution, resources. You also learn in economy, resource mobilization, its impact or distribution of resource, or the role of resource in the development of the countries, or to generating the gross domestic product. What is the contribution of it? The economic aspect is different. But when we learning the resources, their geographical distribution, okay, the important mining areas, what are the constraints there to extract that resources, this is the area of geography. So geography is intricately linked with the economy now. Economists also started using the spatial phenomena, means he also started using the locational analysis approach. ओके, और अब देखो यहाँ, जैसे आपने पढ़ा है वॉन थुनेन का एग्रीकल्चर लोकेशन मॉडल, ठीक है ना? तो एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरीज देखा आपने, और क्या आपने लोकेशनल एनालिसिस का अप्रोच देखा? वीवर हैज यूज्ड इंडस्ट्रियल लोकेशन. देखो लोकेशनल एनालिसिस आने के बाद कैसे नई नई थ्योरीज आने लगी. आपने देखा ना, इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर एरिया में क्यों डेवलप होती. व्हाट इज द रोल ऑफ ज्योग्राफी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री? इकोनॉमिस्ट स्टार्टेड लर्निंग कि उस लोकेशन में ऐसी क्या बात है. इंडस्ट्रियलिस्ट वहां गया, टाटा इतने रिमोट एरिया में एक गांव में जाकर उसने अपनी फैक्ट्री ओपन की, ठीक है ना, एक विलेज में, और उसको एक बड़ा सेटलमेंट डेवलप कर लिया, इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट्स वहाँ इतना बड़ा डेवलप किया. तो बेसिकली ऐसा क्या फैक्टर है, इसी को स्टडी करना है लोकेशनल एनालिसिस के अंदर. और वेबर ने फिर क्या कर दिया? वेबर हैज कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिस्ट, ये वाज इकोनॉमिक ज्योग्राफी. तो आप देखते हो कि एक नई फील्ड है, आपको वो भी पढ़ना है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी. उसमें स्पेशियल साइंस का और लोकेशनल एनालिसिस का बड़ा कंट्रीब्यूशन. तो देयर आर डिफरेंट थ्योरीज व्हिच इवॉल्व, okay, in human geography as a result of this locational concept when brought in the geography.
Okay, so here I had mentioned that. Now, thus, the locational analysis led to building of economic geography theories of spatial arrangement. The greatest contributor was the Adam Smith, 1981. अब आपको याद होगा कि मैंने एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरीज को डिस्कस किया था वॉन थुनेन का, जो कि मच अर्लियर देन दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के आने के बहुत पहले वो थ्योरीज आ गई, बट उसमें भी मैंने रिकार्डो के कॉन्सेप्ट से लिंक करने की कोशिश, ठीक है ना। लैंड के मार्जिनल प्रोडक्शंस को मैंने एक्सप्लेन किया था, और फिर मैंने बताया था कि कैसे वॉन थुनेन ने उसी का एक मॉडिफाइड जो कॉन्सेप्ट लिया ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल्स को, ठीक है। तो क्या है कि there are various economists also started applying the locational analysis in the field of economics, and they interlinked the economy with the geography, and one of the pioneer classical economist was Adam Smith. Okay, 1981, he also applied this concept. Now, तो अभी हमने बात की थी यूएस स्कूल ऑफ थॉट्स से लेकर चले थे, फिर मैंने बिंजी का कॉन्सेप्ट बताया. बिंजी वाज अ staunch locational analyst because what he said in his literature, in his book, that geography is the study of location. Then I had given you the concept of McCarthy, that he also influenced uh, through this approach locational analysis and started using in the field of economics. Another very important economist, Adam Smith, also applied this concept. Now, locational analysis based on empiricism. What this means? Giving a special privilege to empirical observation. Empirical observation. ठीक है. empirical observation means gross generalization के बीच डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को कहते हैं. आप गए फील्ड में और डायरेक्टली देखा, नॉट इन द लैब यू आर एक्सपेरिमेंटिंग. तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन. ठीक है. आपको देखना है कि फूड का प्रोडक्शन अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, फील्ड में जाकर देखते हैं, सर्वे करते हैं, सैंपल स्टडी करते हैं. ठीक है. आपको माइनिंग एरियाज में जाकर देखते हैं रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस को. तो when when a geographer started observing the phenomena directly, direct observation, on the basis of that they develop a theory, then it is known as empirical observation. इसको हम empirical observation कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ मैंने क्या मेंशन किया? लोकेशनल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म, मीन्स हियर द जोग्राफर्स emphasize on डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर इन्होंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया किसी फेनोमेनास का एक खास लोकेशन में, और उसके बेसिस पर उन्होंने थ्योरी जनरेट. तो ये वर्ड याद रखना, एम्पिरिसिज्म और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन. ठीक है. अब देखो क्या होता है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर आपको मैंने बताया था हाइपोथेसिस जनरेट करते हो, फिर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करते हो, देन अगर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ तो आप कंक्लूड कर कर थ्योरी लिखते हो, डिड्यूस करते हो. डिडक्टिव अप्रोच, यहाँ इंडक्टिव अप्रोच. so with the on the basis of this direct observation they induce a concept, inductive approach और एक deductive approach. ठीक है. ये टर्म्स मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की. तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया कि लोकेशनल एनालिसिस बेस्ड ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन मीन्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. so based on empiricism
यहाँ ज्योग्राफर लर्न करने के लिए कोई भी फेनोमेना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से डेटा लेता है और उसके बेसिस पर कंक्लूड करता है, थ्योरी लिखता है, ठीक है, या मॉडल बनाता है, ठीक है. नाउ अनदर ज्योग्राफर पी हैगेट. What we are learning here? What are the major contributor in the field of locational analysis? इस अप्रोच को और फ्लोरिश करने में, ग्लोरीफाई करने में किनका कंट्रीब्यूशन है, ये देख रहे हैं. पी हैगेट is supposed to be the founder of locational analysis. अब देखो, आपने बंजी के बारे में भी पढ़ा था, उन्होंने भी बुक लिखी और ही emphasized geography is the study of location. But who's supposed to be the founder? अगर ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन आते हैं, so you have to write about P. Haggett. Why? Because he detailed studied the geographical phenomena by using this approach and he wrote a book. नाम क्या है? Locational Analysis in Human Geography. What is the name of the literature? क्या किताब लिखी उन्होंने? Locational Analysis in Human Geography. When this book came in the year 1965. So this books came in the year 1965 is